Savvy covers have always been the most memorable. I've got again very old bonds and old friendships here sitting next to me. Nari is here, and we've been friends for a long time. And I think when he started Savvy, that was all what the magazine was about women of substance. And I'm glad and touch wood that they've maintained that standard so far, because now I'm on their cover. So no, but jokes apart, I think not one of your virtues. no, it's not. So, so it's. I mean, jokes apart. So seriously, that was a joke. Okay, please don't misquote me somewhere. But that's what Savvy has always stood for, and that's what I like, because they went behind the scenes, behind what the person is all about on screen, what you see, and it could be anyone. It could be a celebrity. It could be a sports person. It could be anyone. So I think that was really good, and I think most of my innermost interviews or interviews with depth have always been with on a Savvy cover. Salman and me today are very good friends, but when Salman and me started working, I think Salman was about 21. I was about, I think, 16 and a half when I started doing Patthar Ke Phool. And so for me, it was suddenly starting movies, because I had not really done acting classes or this and that. So when Salman used to tease me, I didn't take it right. I was not a good sport, I can say that. So we would be fighting over small things, that why are you blowing bubblegum in my face, because in a photo shoot suddenly Salman decided to blow a bubble in my face and I didn't like it. So I poked the bubble, and then he got angry and I got angry, and we were fighting over bubblegum, yeah, for God's sake. So it was like, meri pencil kyun li, tumne meri pencil kyun li. It was exactly like that. But all I can say is, over the years, I think somewhere along there's a mutual respect and love that did happen, and is very much there between us. He is one of the only co-stars, I can say. There were a lot of co-stars who claimed to be very good friends of mine. जब लोग फिल्में देखने जाते हैं अक्सर हीरोज की बात करते हैं, बट कुछ वक्त से हीरोइंस भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने लगी है. विमेन सेंट्रिक फिल्म द वर्ल्ड हैज बीन इवॉल्व्ड. आपके हिसाब से पहले और अब फिल्मों में क्या अंतर है? व्हेन इट कम्स अंतर ये, पहले हीरोइन ओरिएंटेड बोलते थे, अब आप विमेन सेंट्रिक बोलते हैं. सो दैट्स, विमेन सेंट्रिक इज जस्ट अ मॉडर्न वर्ड, बट अदरवाइज आई थिंक these kind of films have been made right from the beginning. आप अभी की बात नहीं कर सकते हैं. आप मदर इंडिया के टाइम से ले लीजिए, ऑलवेज ऐसी पिक्चरें बनी हैं जहाँ इट इज़, आप मधुमती ले लीजिए, आप मदर इंडिया ले लीजिए. There's so many examples that I can give right now, but I'm not in touch with all those films. And over the years, that has every generation or every time, every period, every decade of films have had their share of heroine oriented films. तो ऐसी बात नहीं है. बट रिसेंट टाइम्स में जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, इट्स ऑलवेज बीन सेड शाहरुख फिल्म, सलमान फिल्म्स एंड आमिर फिल्म. चाहे हीरोइन का एक अच्छा किरदार भी हो, तब भी उतना शेयर नहीं मिलता है. वो डिपेंड करता है अब आप कैसी पिक्चरें करें. अगर आप हॉलीवुड में भी देखें, तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगी, मैं हॉलीवुड की भी बात करूँगी. अगर आप देखेंगे तो अगर ओशंस 12 बन रही है, तो उसमें भी जूलिया रॉबर्ट्स के 2 ही सीन हैं. आप ऐसी पिक्चरें, आप डिपेंड करता है आप कैसी पिक्चरें उठा रहे हैं. अगर विद्या बालन की डर्टी पिक्चर रिलीज़ हुई है, तो लोग यही बोलते हैं कि विद्या बालन की पिक्चर रिलीज़ हुई है. उसमें वो नहीं बोलेंगे कि तुषार कपूर की पिक्चर रिलीज़ हुई. उसमें यही उन्होंने कहा कि विद्या की रिलीज़ हुई. सेम लाइकवाइज उसमें सेम वे में ये हुआ कि जहाँ अगर मर्दानगी रिलीज़ हुई, I don't know who her co-actor was, but everyone said रानी की पिक्चर रिलीज़ हो रही है. So it also depends on who. I mean, when दमन was released, दमन के टाइम ये हुआ कि रवीना की पिक्चर रिलीज़ हुई, ये नहीं हुआ कि संजय सूरी की पिक्चर रिलीज़ हो रही है. So it all depends who's doing what at what time, and I feel every generation, so it's not necessary now. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.